Welcome to Goa 365's News Now. I'm Manish Parab and these are the headlines. The Zuari Nagar market, completed in 2016, now lies in a deplorable state, plagued by theft, vandalism and a lack of oversight from the authorities. A tempo traveller carrying 23 passengers plunged into a deep gorge near the Alaknanda river on the Rishikesh-Badrinath highway in Uttarakhand's Rudraprayag district, killing at least 10. Met Department forecast light to moderate rainfall with intense short spells over the next couple of days. Squally conditions, high waves along the coast. And now for the news in detail. In a tragic incident, a tempo traveller carrying 23 passengers plunged into a deep gorge near the Alaknanda river on the Rishikesh-Badrinath highway in Uttarakhand's Rudraprayag district on Saturday morning, killing at least 10. The horrific accident has left several individuals injured, with some in critical condition. According to Nandan Singh Rajwar, the Rudraprayag Disaster Management Officer, the tragic incident occurred around 11 am near Raitoli village. The tempo traveller, navigating the treacherous mountain roads, skidded off the highway and plummeted approximately 250 meters down onto the banks of the Alaknanda river. Prompt rescue efforts were initiated by the local administration and the State Disaster Response Force, who swiftly deployed teams to the accident site. 14 of the injured passengers were immediately rushed to the district hospital for medical treatment, while some critically injured individuals were airlifted to the All India Institute of Medical Sciences in Rishikesh for advanced care. जो है नदी में गिरा है, जिसमें लगभग 23 व्यक्ति जो है वो होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। सूचना मिलते ही जो है जनपद की जो पुलिस है वो पुलिस, उसके साथ साथ SDRF, DDRF, फायर की टीम, एम्बुलेंस और सारे विभाग जो है इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब तक की जो सूचना है उसमें हमने लगभग 15 जो यात्री है उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है, जिनकी तबीयत सीरियस है। उनको हॉस्पिटल में इमीडिएटली उपचार जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। बाकी जो यात्री उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami expressed deep anguish over the tragic accident and directed authorities to ensure that the injured receive the best possible treatment. He also ordered the Rudraprayag district magistrate to conduct a thorough investigation into the incident to determine the cause and prevent such occurrences in the future. In a social media post, the Chief Minister assured the public that the local administration and SDRF teams were actively engaged in relief and rescue operations and that the injured had been admitted to the nearest medical facilities. Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365. As Delhi continues to reel under a heat wave and a huge water crisis, its government has appealed to Haryana to discharge additional water into the Yamuna on humanitarian grounds. The Supreme Court had earlier directed the Himachal Pradesh government to release 137 cusecs of water to the national capital and asked neighbouring Haryana to facilitate its flow. Delhi Water Minister Atishi said on Saturday that the capital is facing a shortage of 70 million gallons per day in production due to lack of raw water in the Munak Canal and Wazirabad Reservoir. The normal water production of around 1002 mgd in Delhi went down to 932 mgd on Friday because of lack of raw water, she said. आज मैं आपको अपडेट देना चाह रही थी कि अभी भी दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है लगातार उसमें कमी चल रही है। वज़ीराबाद पॉन्ड पर जहां पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए, 668.5 फीट पर पानी है, यानी लगभग वज़ीराबाद पॉन्ड में पानी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मुनक कनाल में जहाँ पे 2 सब कनाल्स के माध्यम से दिल्ली को पानी आता है, जो CLC और DSB है, उसमें भी पानी की कमी चल रही है। जो 10 जून को पानी बढ़कर 925 क्यूसेक पर डे हो गया था, वो फिर से 11 जून को घटकर 919, 12 जून को 903, 13 जून को 906 और 15 जून को 902 क्यूसेक पर अभी है।
दोनों सोर्सेज से पानी की कॉन्टिन्यूड कमी की वजह से दिल्ली में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 MGD का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले एक हफ्ते से लगातार गिर रहा है। ये आंकड़ा 6 जून को 1002 MGD पर था। ये 10 जून तक गिरकर 958 MGD तक पहुंच गया। 13 जून को ये 939 MGD पे था और कल यानी 14 जून को ये 932 MGD पर पहुंच गया। मेरी आज सुबह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से बात भी हुई है। उन्होंने भी ये एश्योरेंस दिया है कि जो हिमाचल प्रदेश से सपोर्ट की ज़रूरत है, जो उनसे कागजात की ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो जल्द से जल्द अपर यमुना रिवर बोर्ड को प्रोवाइड की जाएगी। हिमाचल प्रदेश ने फिर से दिल्ली के लोगों के प्रति अपने कमिटमेंट को दोहराया है, लेकिन क्योंकि इन कैलकुलेशंस को असेस करने में अपर यमुना रिवर बोर्ड को कुछ समय लग सकता है, दिल्ली ने हरियाणा को एक ह्यूमैनिटेरियन अपील फिर से करी है और उस ह्यूमैनिटेरियन अपील के तहत हमने हरियाणा से ये आग्रह किया है कि वो कुछ एडिशनल पानी अगर दिल्ली को छोड़ सकते हैं। अपर यमुना बोर्ड ने ये भी सजेस्ट किया है कि दिल्ली और हरियाणा कुछ बायलैटरल बैठक करें और अगर कुछ पानी हरियाणा दे सकता है तो वो ज़रूर रिलीज़ करें। दिल्ली सरकार के अफसरों ने भी हरियाणा सरकार के अफसरों से बात करी है और इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर्स का एक डेलीगेशन कल चंडीगढ़ जाएगा और हरियाणा के ऑफिसर से मुलाकात भी करेगा। तो हम हरियाणा सरकार को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी अपील कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार दिल्ली की अभी की परिस्थिति में कुछ एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ करे। किसका कितना हिस्सा है, उसका क्या कैलकुलेशन है, इस सब पर बातचीत ये हीट वेव निकलने के बाद बिल्कुल हो सकती है। A meeting with Delhi Jal Board officials on Saturday had decided that an assessment be done of areas not getting any water and the number of water tankers be increased. Currently, tankers are making around 10,000 trips and supplying 10 MGD of water per day. In some other areas like Bawana, Dwarka and Nangloi, emergency tube wells have been started to provide water to the local residents, the minister said. अभी हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी। इसमें हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहाँ पर पानी के टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर ऑल टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर पानी का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है तब तक वाटर टैंकर्स ही एक माध्यम है जिनसे हम पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं। 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस होने की वजह से जो दिल्ली में कई इलाकों में पानी की कमी थी वो अभी भी बरकरार है। हमने दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल्स करवा के उनको वाटर सप्लाई से लिंक किया है। खास करके बवाना में, द्वारका में, नांगलोई में, वेस्ट दिल्ली में जहाँ पे काफ़ी पानी की शॉर्टेज थी, इमरजेंसी के तौर पर बोरवेल्स को वहाँ के UGR से लिंक किया गया है कि जो हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स हैं उसमें बोरवेल्स का पानी जोड़ा जाए। टैंकर्स के भी ट्रिप्स अब एक दिन में 10,000 ट्रिप्स दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकर्स के किए जा रहे हैं। अब तकरीबन 10 MGD पानी दिल्ली जल बोर्ड टैंकर्स के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कर रही है। Meanwhile, the IMD has issued an orange alert for heat wave condition in Delhi until June 18th. The maximum temperature in the national capital during this period is expected to settle around 45 degrees Celsius, which is 5 degrees above the normal temperature. The minimum temperature will settle at 31 degrees Celsius, that is 2 notches above temperature normal. According to the forecast, rainfall is expected in Delhi on 20th of June.
The minister also spoke about this. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी सिवियर हीट वेव के दौरान जब दिल्ली में टेम्परेचर्स 46-47 डिग्रीज टच कर रहे हैं, Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Zuari Nagar Market, a multi-crore project undertaken by the government to provide modern amenities to the residents of the Zuari Nagar slums, has become a cause for concern. Despite the substantial investment, the market, completed in 2016, now lies in a deplorable state, plagued by theft, vandalism and a lack of oversight from the authorities. Here's our reporter Hiru Mahale with more on this. गोंयांत जुवारी नगर हे फामाद आसा कित्याक की हांगा स्लम एरिया आहा आनी हांकां रिहॅबिलिटेशन करपाची जायती फावटी एश्युरन्सीस मेळ्ळले पूण ती रिहॅबिलिटेशन केन्ना जावंक ना. त्या भायर तेंचे जी स्लम एरिया ही खंय रिडेवलप करपाची तशें तांकां बरे तरेचे मार्केट दिवपाचो होय प्रयत्न केलो. आनी तितूंतलेंच एक म्हटल्यार हे जे फाटल्यान म्हाज्या दिसता तें मार्केट. हे मार्केट जे आहा हे जुवारी नगर भागान मार्केट आसा आनी हे मार्केट जे बांदलेले 2006 जेन्ना CM आसलो पार्सेकर आनी हांगा अलिना हांगा आसली MLA आसली आनी मिनिस्टरूय आसली आनी हो जेन्ना मार्केट हातीन घेतलो बांदपाक तेन्ना हो प्रोजेक्टाक जेन्ना रिहॅबिलिटेशन बोर्डाच्या हातून घेतलो पूण आतां 8 वर्सां जाल्ली आहा ऑलमोस्ट पूण 8 वर्सां हेची परिस्थिती जी आहा ती एकदम बिकट जाल्ली आसा. हांगा प्रमोद सावंतूय CM येवन गेल्ला आनी तेन्ना हांगा जी रेलिंग आसले विंडोज आसले त्या भायर हांगा फिक्चर्स आसले इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स आसले हांगा बाकीचे सगळे फिक्चर्स आसले जशे टॉयलेटीची फेसिलिटी आसली पूण सद्याच्या परिस्थितीन रेलिंगूय ना इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स ना आनी बाकीचे जितके आयटम्स आहात तितके ना. हे मार्केटान फक्त आतां हांगा लोक टॉयलेटीक बसतात नाल्यार हांगा नाकाल्यो गजाली जातात जाल्यार सोरो पिवपाक बसता. ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाक लागला आनी हो एक्सचेकर्स जो पयसो आहा जो लोकांचो पयसो आहा हो अशा तरेन हो वेस्ट जावपाक लागला अशें दिसून येवपाक लागलें आसा. जेन्ना आमी हांगाचे लोकल्सा कडेन फायंड आवट केले तेन्ना आमकां दिसून येयलें की हे जे मार्केट आहा हे सगळे ओपनिंग करपाचे वाटेर आसले पूण हे जे हांगा जे फिक्चर्स आसले आनी बाकीचे आयटम फाटल्या 1 वर्सा भितर टोटल चोरयेक गेल्ले आसा. फाटल्यान एक टाकी मारलेली आसा ती ओपन आनी फाटले जायती गोरवां ह्या टाकयेनूय पडटात अशी आमकां म्हायती लोकलांनी दिल्ली आसा. पूण अशा तरेन हे जे लोकां खातीर बांदलेले मार्केट ओपन न करता अशें चोरयेक वयपाक लागलेले आसा तेन्ना ह्या भागांत सेक्युरिटी हेची कितकी गरजेची आहा ही म्हत्वाची आहा. सायडीक आउटपोस्ट आहा पूण वेदर ह्या आउटपोस्ट ह्या एरियेक सुटेबल आहा वेदर हांगा कोणाची नजर आहा आनी ही जर चोरयेक गेली मालमत्ता सरकाराची जाल्यार तिचेर कंप्लेंट जाली काय हा ही मोठी प्रश्न आहा. तेन्ना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन हेचेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष दिवपाक जाय. पंचायत MLA हे सगळ्यांनी हेतून लक्ष दिवपाची गरज आहा आनी जी सरकाराचो पैसो आहा अशा तरेन वेस्ट वयता ती खंय तरी सांबाळपाची गरज आसा. According to local residents, the once promising facility now faces a myriad of issues including sewage problems, garbage accumulation and missing fixtures. What was supposed to be a modern shopping destination has instead turned into a hotspot for antisocial activities with no apparent intervention from the authorities. ये मार्केट सर पहले बहुत अच्छा था, जब बना था ना तब बहुत अच्छा था. जब से कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के गया इधर पूरा सामान चोरी हो गया, मतलब पूरा गंदा कर दिया. बिल्डिंग बहुत अच्छा बनने वाला था ये मार्केट. इधर हमारा इधर सर टॉयलेट बन गया है मार्केट पूरा, ये पूरा चोरी हो गया. ये सब चोरी करके इधर का लोग क्या मालूम नहीं लोकल है क्या कोई बाहर है कोई पता नहीं है. मेरा शॉप इधर ही है. हम लोग देखा था आज से 1 साल पहले सब था इधर, अभी 1 साल के अंदर ये सब चोरी हुआ पर कौन किया वो पता नहीं है. The situation has also sparked questions about the ineffective utilization of public funds and the lack of proper monitoring and maintenance of government projects. As the issue continues to garner attention, it remains to be seen whether the authorities will take decisive steps to rectify the situation and bring accountability to those responsible for the neglect of this vital public facility. Hiru Mahale, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. Prime Minister Narendra Modi returned back from the G7 summit in Italy today. The summit did not just include intense discussions about the global south and the world order, but had some lighter moments with warm embraces with leaders and a selfie video with Italian PM Giorgia Meloni. PM Modi, who was in Italy for the outreach session of the 50th G7 Leaders Summit,
held bilateral discussions with several world leaders on the sidelines. The PM thanked the people and government of Italy for their warm hospitality as he left. The PM addressed the outreach session focused on issues relating to AI, energy, Africa, and the Mediterranean. On the sidelines, he held discussions with his UK counterpart Rishi Sunak, French President Emmanuel Macron, and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. He also met the United Nations Secretary General Antonio Guterres, Jordan's King Abdullah II, and Pope Francis, who is the first pontiff to join the G7 participants. PM Modi and his Italian counterpart Meloni had a bilateral discussion in a pull-aside meeting of the summit. However, they took a moment to click a selfie video with the tagline, "Hello from the Melody team," with Meloni engaging with the trending hashtag created by people on the internet who seem to have taken a special liking for the camaraderie shared by the two prime ministers. Hello from the Melody team! For the first time since the G20 summit last year, Modi met Canadian PM Trudeau in Italy, the first interaction following allegations made by Trudeau on the government's involvement in the killing of Khalistani separatist Hardeep Singh Nijjar in British Columbia province. Modi kept it to a cryptic one line with Trudeau and was seen shaking hands with his Canadian counterpart. Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. The Indian Meteorological Department has issued a weather advisory for the state of Goa, forecasting light to moderate rainfall with intense short spells over the next couple of days. The Weather Bureau has also warned of squally conditions and high waves along the coastal regions. Here's a detailed weather forecast. According to the IMD, light to moderate rainfall with 1 or 2 intense spells is very likely to occur over the state.
Maximum and minimum temperatures are expected to hover around 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively, with no significant fluctuations anticipated. However, the real concern lies in the wind and wave conditions along the coastal areas. The IMD has issued a high wave warning for the coastline of North Goa from Shapora to Panjim, where waves in the range of 1.9 to 2 meters are forecasted from 11:30 pm on Saturday until 11:30 am on Sunday. Similarly, the South Goan coast from Satrem to Kollam is expected to experience high waves of 1.9 to 2 meters from 8:30 pm on Saturday until 2:30 pm on Sunday. While no immediate action is required, the IMD has advised residents and visitors to stay updated on the latest weather forecasts and exercise caution during the expected rainfall and high wave conditions. Light to moderate rainfall over the weekend. No weather warnings issued for the weekend. Intense short spells of rain very likely. High wave warning issued for Goan coast. Temperatures to remain stable. Maximum and minimum temperature Sunday 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.